और वो समथिंग है बेटरमेंट। हर कोई बेटर बनना चाहता है। जो साइकिल वाला है वो सोचता है मैं बाइक ले लूँ, बाइक वाला इस तरकीब में है कि मैं कार ले लूँ, कार जिसके पास छोटी है वो इस फिराक में है कि मैं बड़ी कार ले लूँ। तो अंदर से हर ह्यूमन बीइंग बेटरमेंट चाहता है। आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड से हो, you may be a beggar searching for food, or you may be, Albert Einstein, or Nikola Tesla, or Elon Musk, or Mark Zuckerberg. You can be anything, but one thing is sure, that the purpose behind your existence is betterment. Everybody is in search of better aspects of life. So this is phenomenal, this is substantial, and it pervades all aspects of life. So in a nutshell, we can say that there is a system. Things are working in an automatic way. It's not controlled by your thoughts, your emotions, your feelings. There exists something which is controlling everything. There is a system of working. There is something which is in control of everything. And there are certain rules. There are quantized rules to do things. And things will happen in their own way. You cannot manually control them out. So universe is itself a system. It can be thought of as the brain of the god or brain of something. And it is being guided by rigid rules, the rigid protocols. You cannot change the rules. You can only feel the rules. You can only decode the rules, or it's like you can decode the pattern. Entire universe is following certain patterns. You don't have the guts to change the patterns. You can only analyze the patterns and use them for your benefit. So it's as simple as that. So I was just discussing about the mind and brain, but for explaining mind, for elaborating mind, that what are the higher dimensions, what are things which are even beyond mind, I need to use this example. So if you want to raise yourself above the mind, then you have to raise your frequencies above the mind. And one more interesting thing आपसे बात करूँगा, आपको जो फील होता है, it is because of the frequency of your brain waves. आपने देखा होगा कि ब्रेन एक चीज़ है, माइंड एक चीज़ है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। माइंड ब्रेन से इंटरेक्ट करता है टू डू सर्टेन थिंग्स, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है टेक्स प्लेस वाया द ब्रेन वेव्स, जिसका एग्जिस्टेंस ईईजी के थ्रू आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज हुआ है कई बार कि हमारे ब्रेन वेव्स को 5 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। इसमें जो थीटा ब्रेन वेव्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है,